Hello students, welcome back. This is the video of class 9th and here we are discussing about the chapter 2, which is tissues, and in this video we are going to solve the short answer questions given in this chapter. So let's begin. Question number 1 is, give 2 points of differences between striated and non-striated muscles. आपने types of muscles पढ़ा था chapter में. So there are 3 types of muscles found in the animal's body: striated, non-striated and cardiac. So you have to give the 2 differences between striated and non-striated muscles. So if you see the picture of striated muscles and non-striated muscles, you can understand the difference between these 2 muscles. First of all, the striated muscles are having striation. They have a striation and they are multinucleated. Okay, they are having a striation, dark and light band, and they are multinucleated. In contrast of this character, you can see then this in smooth muscle cells, you see there is no striation and it is uninucleated. Okay, each cell is spindle shaped like this, pointed at the end and having only one nucleus. So this is the 2 different characteristic found in the striated and smooth muscle cells. Next question is, write short notes on any 4 of the following: Connective, Sclerenchyma, Glandular Epithelium, Connective Tissue and Cardiac Muscles. So first of all, we'll talk about the Connective. Connective is a kind of plant tissue, simple permanent tissue, and the cells which are found in the Connective, they are the living cells. Cytoplasm is present in this cell because it is living. Cell wall are formed of cellulose. The cell wall is having cellulose and cell wall having the thickening which is not uniform, and they have much thickened at the corner. Cell lumen is white. You can see in this picture that there is a thickening at the corner of the cells which are found in the Connective due to the extra deposition of cellulose. So this is the characteristic feature. Now cell lumen is white and it gives mechanical support and elasticity to the plant. Next, you have to talk about the Sclerenchyma. Sclerenchyma are the plant tissue which is non-living cells. Cytoplasm dries up on the maturity. Cell walls are having substance called as lignin. That's why you can say it is lignified. Cell wall is highly thickened and uniform. You can see this. The cells are very thick, very thick. Cell lumen is narrow due to the thickening of the cell wall, and it gives mechanical support to the plant's body. Next, you have to tell about the glandular epithelium. Glandular epithelium are the modified form of columnar epithelial cells, and they are found in the skin and lining of the alimentary canal and in the pancreas, etc., and they secrete the mucus, enzyme and hormone. Glandular cells are responsible for secretion of different kind of substances, so their main function is secretion. Here you can see this is the glandular epithelium. This cell is basically modified to produce mucus, and these cells are especially called as goblet cells. Next is you have to tell about the connective tissue. Connective tissue are the tissues which connect and bind the different tissues or organs together, and they also provide the structural framework and mechanical support to the body, and it also play a role in body defense, tissue repair, fat storage, etc. It is composed of 2 basic components: cells and matrix.
Now you have to tell about the cardiac muscle. The structure of cardiac muscle, if you see, the cardiac muscle cells are short, branched and interconnected. They are striated, means having dark and light band. They are multinucleated, and our cardiac cells are joined via electrical synapses, and that junction of the cells are called as intercalated disc, and these are found exclusively in the heart. And while rhythmic contraction, they help to uh, pump the blood. Now the next question is, write notes on sieve tubes and tracheids. Sieve tubes are the cells which are found in the phloem, and if you remember that, tracheids are the cells which are found in the xylem. So you have to write about the sieve tube and tracheid. So here is the sieve tube. Sieve tubes are the elements of phloem. They are slender, tube-like structure composed of elongated, thin-walled cells placed end to end. And the main function of sieve tube is to transport sugar and nutrients up and down to the plant. You can see here in this is the diagram of phloem, and this is the sieve tube, which is having perforated sieve plate at the end, and they help in the conduction of food up and down. Next question is next part of this question is tracheid. Tracheids are the elements of xylem. These cells are elongated with pointed ends. Their walls are thick and lignified. They conduct water and dissolved substances from the root to the leaves. You can see here in this picture of xylem, you can see this is the tracheid. This is the tracheid cell, which is dead cell, and they are having the pointed end and help in the conduction of water. Next question is, write two characteristics of nerve cells. So nerve cells are having three main parts in its structure: cyton or cell body, this is the first part, dendrite second, and the axon is the third part. Nerve cell is involved in the transmitting or conducting the impulses to the different part of the body. You can see this is the nerve cell. It is having the cyton or cell body, then branches are emerging from the cell body, it is called dendrite. The longer branch is called axon. Okay, so these are the three main parts. Next question is, how many types of elements are present in the phloem? Write their functions. So in phloem is the complex permanent tissue found in the plant which help in the conduction of food. So there are four elements: sieve tubes, companion cells, phloem, fibers and phloem parenchyma. These are the four components found in the phloem, and function of sieve tube is to translocation of organic substances through perforated walls from one adjacent cell to the another cell. Function of companion cell, help to control the activity of sieve tube element. Function of phloem parenchyma is transport of food, sugar and amino acid from leaves to the other non-green part of the plant, such as growing stem and root. Function of phloem fiber is provide mechanical strength to the plant. Now you can see this is the picture of phloem. This is the sieve tube cell, this is the companion cell, this is the parenchyma, and this is the phloem fiber. Now the next question is, how many types of elements are present in the xylem? Write their functions. xylem में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है आपको लिखना है. तो xylem जो है वो उसमें ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट. अगर हम जाइलम की बात करें तो ये जाइलम जो है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा था, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा. इनके क्या फंक्शन है? ट्रैकीड का अगर फंक्शन देखें तो ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थिक सेल वॉल होती है, टेपरिंग एंड होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं, सेल डेड होती हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, वेसल्स को अगर हम देखें तो वेसल्स आर सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेनी सेल्स एंड कॉल्ड वेसल मेम्ब्रेन्स. इनका काम क्या होता है? वाटर को कंडक्ट करना. ट्रैकीड एंड वेसल्स बोथ आर द वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. वाटर कंडक्शन इनका काम होता है. नेक्स्ट, अगर वेसल्स की बात करें तो ये लार्ज सेल कैविटी इनके पास होती है, सेल वॉल में लिग्निन होता है, लिग्निफाइड होती हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल. इनके एंड में परफोरेशन होता है.
ठीक है, ओपनिंग होती है लाइक दिस परफोरेशन। नेक्स्ट फाइबर क्या करते हैं, दे आर द हाईली थिकेंड वॉल्स having they are having highly thickened walls, xylem fiber like this, and they provide mechanical strength, they provide mechanical, इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जाइलम को। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा ये थिन एंड लिविंग सेल्स होती है, थिन वॉल होती है, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द plants. It also stores food in the form of starch or fat and substances such as tannin. Next question है, what is the specific function of cardiac muscle? Cardiac muscle का specific function आपको बताना है। Cardiac muscle कंट्रोल करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये हार्ट में पाए जाते हैं, आपको पता है कि कार्डियक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द हार्ट, सो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द हार्ट ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियक मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ फाउंड ओनली इन द हार्ट, यू नो दैट दिस मसल अलाउ आवर हार्ट टू पम्प ब्लड, सो दिस इज द फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक मसल टिश्यू, this is our heart and this is the cardiac muscle cells which are branched and interconnected, and they contract and relax rhythmically so that our heart can pump the blood in our body. Draw well labeled diagram of neuron. Neuron का level diagram आपको draw करना है like this, you can see this is the diagram of neuron. सो न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक साइटॉन यानी कि सेल बॉडी, उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं जिसको आप डेंड्राइट बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली ब्रांच होती है उसको आप एक्सॉन बोलते हैं, है ना। इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्सॉन जो होता है वो एक लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, दिस इज़ कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इट इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड स्वान सेल, इसको हम स्वान सेल कहते हैं। और स्वान सेल्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, और नोड्स होते हैं जो, उनको हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन आप देखते हैं कि एक्सॉन ब्रांच हो जाता है, दैट ब्रांचिंग ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, and this make the synapse with the other neuron. So this is the label diagram of neuron, you have to draw in your copy. Next question is, write one term for the following. एक टर्म आपको बताना है, दैट जॉइन मसल्स टू बोन, दैट आर फैट रिजर्वायर ऑफ आवर बॉडी, दैट सपोर्ट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड हेल्प रिपेयरिंग द टिश्यूज। मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव टिश्यू का नाम आपको लिखना है, सो दिस इज़ द टेंडोन। ठीक है, आपने पढ़ा था टेंडोन एंड लिगामेंट और द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडोन जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करता है। MTB आपने पढ़ा था ना, M स्टैंड फॉर मसल, B स्टैंड फॉर बोन एंड T स्टैंड फॉर टेंडोन। सो मसल्स एंड बोन को अटैच करने का काम करता है टेंडोन। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दैट आर फैट रिजर्वायर ऑफ आवर बॉडी। फैट रिजर्वायर आपके कौन से टिश्यूज़ में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, दिस इज़ द एडिपोज टिश्यू, एंड दीज आर द एडिपोसाइट्स, दीज आर द फैट सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट। ये क्या है, एडिपोसाइट्स हैं, और इसमें जो येलोइश कलर का आपको सेंटर में दिख रहा है, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल, ये क्या है, फैट की ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ग्लोब्यूल हैं जो इस फैट सेल के अंदर रिज़र्व की जाती हैं। तो हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट को रिज़र्व एंड स्टोर करने का काम करता है, एंड एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, एंड इनको हम फैट सेल भी कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फैट सेल ऑल्सो। नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दैट सपोर्ट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड हेल्प रिपेयरिंग द टिश्यूज। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, एंड दे रिपेयर द डैमेज टिश्यू इन आवर बॉडी, एंड दे हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, इम्यूनिटी, रिपेयरिंग एंड सपोर्ट, ये सारे काम इनके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द फॉलोइंग एंड गिव वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट लेबल्ड A, B एंड C। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको लेबलिंग करनी है। दिस इज़ द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सो आप क्या बताएंगे, दिस इज़ द टिप ऑफ द स्टेम, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम।
जो बेस ऑफ द स्टेम और नोड पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड जो लैटरल साइड वाइज पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, एंड आपको पता है इसका फंक्शन आपको बताना है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम लेंथ है ना, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, इंटरकैलरी इलोंगेशन में हेल्प करता है, प्लांट में स्टेम एंड रूट एंड लीव्स को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, एंड देन जो आपकी लैटरल मेरिस्टेम होती है वो प्लांट्स की थिकनिंग को, है ना, थिकनिंग को ग्रो करने में, डायमीटर को ग्रो करने में, चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है शो डायग्रामेटिकली द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, यही क्वेश्चन अगेन है, आपको इसी डायग्राम को ड्रॉ करके आपको लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम बताना है। टिप पर एपिकल मेरिस्टेम होगा, बीच में इंटरकैलरी होगा, नोड्स पर, ठीक है, और लैटरल मेरिस्टेम किधर होगा, साइड में होगा, जो उसके डायमीटर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो नेम द टिश्यू विच इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट। स्टेम और रूट को ग्रो करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है, आउट ऑफ थ्री मेरिस्टेम आपको बताना है कौन सा मेरिस्टेम रूट और स्टेम की लेंथ को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, apical meristem and intercalary meristem. Apical and intercalary meristem are responsible for the growth in the length of the stem and roots of plants. Okay, now you have to give the answer of what is the differentiation of meristematic tissue. meristematic tissue में जो differentiation होता है उसका मतलब क्या होता है, you have to tell. डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है दिस इज़ द प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनके अंदर, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर की जो सेल्स होती हैं जब वो एक परमानेंट ली शेप, साइज और फंक्शन को टेकअप कर लेती हैं, दे बिकम परमानेंट, दे टेक परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड दिस इम्प्लाइज द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाती हैं तो देन दे बिकम परमानेंट टिश्यू। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी एपिकल या इंटरकैलरी या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आगे चलकर क्या हो जाएगा, परमानेंटली शेप, साइज एंड फंक्शन को टेकअप कर लेगा एंड इट विल बिकम परमानेंट टिश्यू, लाइक इट कैन बिकम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट, अलग अलग सेल्स में ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड इट विल टेक द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल सारी सेल्स क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं, एंड व्हेन दे लूज द एबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन दे टेक अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन एंड दे बिकम परमानेंट। ओके, तो कोई भी परमानेंट टिश्यू प्लांट में जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं। ओके, लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है अलग अलग पोजीशन पे, एपेक्स पे, मिड पॉइंट पे यानी कि नोड एंड इंटर नोड पे, या फिर लैटरल साइड में, यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, मींस दे विल बिकम परमानेंट, और फिर वो परमानेंटली एक फंक्शन उनका डिनोट हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं पैरेन्काइमा का अलग फंक्शन होता है, कोलेनकाइमा का अलग है, स्क्लेरेन्काइमा का अलग फंक्शन होता है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये ही लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चंस गिवन इन दिस चैप्टर। सो till then, thank you, have a nice day.